Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Girl Guide. This is the second part of the basic Linux command. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं. उसमें भी हमने कमांड्स देखी हैं जिनको हम लिनक्स में यूज़ करते हैं Ubuntu के अंदर. आज हम जिन कमांड्स को देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना सी हाउ टू इंस्टॉल, remove, upgrade, purge and auto remove different packages, and for that purpose we will be using the sudo. So sudo stands for super user do, and it is used basically to allow a standard user to execute a command with the root or a super user privilege. So इसके थ्रू जो है वो हमें परमिशन मिलती है कि हम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकें विद द रूट. एंड जब हम इसको यूज़ करेंगे विद द apt get install, अगर हमने पैकेजेस को इंस्टॉल करने हैं तो हम apt-get और फिर स्पेस इंस्टॉल को यूज़ करेंगे, और साथ में हम यूज़ करेंगे उस पैकेज का नेम जिसको हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं. सो हेयर वी हैव यूज vlc. You can use any package like python or any other package you want to install. जब भी हम एंटर करेंगे sudo के साथ तो ये हमसे जो है वो पासवर्ड रिक्वायर करेगा, just like it's requiring and I have entered the password. ये पासवर्ड आप तभी एंटर कर सकते हैं जब आपने अकाउंट अपना बनाया हो Ubuntu के अंदर. सो जब भी हम उस पासवर्ड को एंटर करेंगे, अगर वो पासवर्ड सही एंटर नहीं हो, ऑब्वियसली इट वॉन्ट एग्जीक्यूट दैट कमांड. सो अगर मैं पासवर्ड दोबारा से इसको एंटर करती हूँ, एंड नाउ इट्स द करेक्ट वन, एंड यू कैन सी द इंस्टॉलेशन हैज़ स्टार्टेड. सो इस तरह से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी. अगर ये येस या नो रिक्वायर करेगा, आप लोग वाई प्रेस कर सकते हैं टू कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन. सो इस तरह से डिफरेंट पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि आफ्टर सम टाइम इट विल बी इंस्टॉल्ड. Just like we have installed the package, we can upgrade it as well. So अगर हम sudo apt-get upgrade और साथ में पैकेज का नेम यूज़ करेंगे, so वो स्पेसिफिक पैकेज को जो है वो अपग्रेड कर देगा. If we want to update all the packages, we can simply use sudo space apt-get space update, and we won't mention any specific package here. So it's simply to update all the packages available. So the next command is remove. So हम remove भी कर सकते हैं जो भी specific package हम remove करना चाहते हैं. So we will be using sudo apt-get remove, and then vlc जिसको मैंने अभी इंस्टॉल किया है, मैं उसको जो है वो रिमूव कर रही हूँ. सो एंटर प्रेस करेंगे. इसी तरह से इसकी जो है वो रिमूव वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट विल बी रिमूव. एंड इफ़ वी have removed any specific package, it doesn't mean कि उसकी जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स थी वो भी रिमूव हुई हैं. सो Ubuntu में अगर आप उन टेम्प्रेरी फाइल्स को या उन फाइल्स को रिमूव करना चाह रहे हैं जो कि सिंपल रिमूव करने से रिमूव नहीं हुई, फॉर दैट पर्पस वी विल बी यूजिंग purge, purge. पर्ज को हम यूज़ करेंगे. पर्ज इज़ यूज टू रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा फाइल्स जो कि सिंपल रिमूव करने से पैकेज के रिमूव नहीं होती. सो पर्ज के साथ भी हमने vlc को यूज़ किया है. द नेक्स्ट कमांड इज़ ऑटो रिमूव. हम सिंपल ऑटो रिमूव को यूज़ कर सकते हैं आफ्टर रिमूविंग एनी पैकेजेस. सो जब भी हम डिफरेंट पैकेजेस को रिमूव करते हैं, वी कैन यूज़ sudo apt-get ऑटो रिमूव टू रिमूव द पैकेजेस जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा Ubuntu में अवेलेबल हैं. सो ये ऑल उन पैकेजेस को रिमूव कर देगा. सो द नेक्स्ट कमांड इज़ हिस्ट्री. सो हिस्ट्री को हम क्यों यूज़ करते हैं? हिस्ट्री को हम इफ़ वी वांट टू सी ऑल द स्पेसिफिक कमांड्स वी हैव यूज्ड इन पास्ट, जैसे कि मैंने अभी sudo apt-get ऑटो रिमूव यूज़ किया था, पर्ज यूज़ किया था, तो वो सारे की जो है वो हमें एक डिटेल्ड लिस्ट शो करवा देगा एज अ हिस्ट्री, जो कि मैं अभी रिमूव यूज़ कर चुकी हूँ. सो नेक्स्ट इज़ df. सो df स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले फाइल सिस्टम. जब मैंने df के साथ एंटर प्रेस किया, यू कैन से ये हमें पूरा एक फ़ाइल सिस्टम शो करवा रहा है, एंड इट्स ऑल्सो शोइंग वेयर दीज फाइल्स आर माउंटेड. इनको 1K के ब्लॉक में जो भी इनका साइज़ है वो शो करवा रहा है. एंड इफ़ आई यूज़ df स्पेस -h, ये उसी तरह से जो है वो हमें फ़ाइल सिस्टम को शो करवाएगा, बट हेयर यू कैन सी इट्स शोइंग इन द साइज़ ऑफ गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स. नेक्स्ट कमांड इज़ du, एंड du कमांड स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी यूजेज. सो ये डिस्प्ले करवाता है डिफरेंट डायरेक्टरीज़ के और सब डायरेक्टरीज़ के साइज़ को.
उनके साइज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ हुआ है। ये देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास जो भी डायरेक्टरीज थी उनके साइज़ को शो करवा रहे हैं। द नेक्स्ट कमांड वी विल बी यूजिंग इज़ फ्री. Free command is used to show the amount of the free space in the Ubuntu. You can see that there are the list of used, total, free, shared, and all the memory that is available. So the next command is uname. So uname command is used to display the basic information about the system. जैसे कि लिनक्स को इसने सिंपल शो करवाया है, अगर मैं uname के साथ स्पेस -a एंटर कर दूं तो ये मेरे पास बाकी भी जो डिटेल्स हैं वो भी uname के साथ शो करवा रहा है. सो द नेक्स्ट कमांड इज़ head file 4. सिंपल अगर हम किसी भी फाइल के कंटेंट्स के फर्स्ट 10 लाइंस को रीड करना चाह रहे हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन द हेड. सो मैं यूज़ करूँगी हेड स्पेस फाइल नेम जिसके अंदर मेरे पास कंटेंट है जिसको मैं रीड करना चाह रही हूँ. देन आई विल बी यूजिंग द टेल कमांड इज़ यूज टू शो the last 10 lines of any file. So tail file 4 will be used to show the last 10 lines, as I have told that file 4 have only 3 lines which I have written in it, so it will be showing the last 10 lines. So ये वही वाली lines को show करवा देगा. Then I'll be using ps. So ps is used to display the list of processes. जितने भी processes run हो रहे हैं किस टाइम पे हो रही हैं उनकी list देखने के लिए हम ps को यूज़ करेंगे. And gzip. Gzip is basically to zip any file. You can simply use gzip and the file you want to zip. जैसे कि file 4 है मैं इसको zip करना चाह रही हूँ and you can see कि ये जो है वो zip हो चुकी है. And then again अगर मैं इसको unzip करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी g unzip and then the same file that is already being zipped. So file 4 और ये दोबारा से जो है वो unzip हो गई है. And simply if I use W, it will show the user details like user ने कब login किया, user ने कब log out किया, and all these things will be showed through W. So after the W we can use another command that is find. So find command is basically to find any directories or files. So find command को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. find को अगर हम simple find space dot space minus name के साथ यूज़ करते हैं तो ये सिंपल उस फाइल की हमें लोकेशन बता देता है और ये भी बता रहा होता है कि ये फ़ाइल अवेलेबल है कि नहीं. जैसे कि फाइंड डॉट स्पेस माइनस नेम और मैंने उस फाइल का नेम लिख दिया जिसको मैं फाइंड करना चाह रही हूँ. सो इट्स शोइंग दैट येस दिस फाइल इज़ अवेलेबल. मैंने किसी भी फाइल को होम डायरेक्टरी में फाइंड आउट करना है सो आई हैव टू यूज़ sudo विद दैट. सो आई विल बी यूजिंग sudo find space \home space minus name space file 4. So it will be finding that file 4 in specifically home directory. So ये जो है इसने find out कर लिया because that was available in home directory. But sometimes it happens कि हम लोग जो है वो फाइल का नेम सही से एंटर नहीं करते, हम केसेस का ख्याल नहीं रखते, either it is capital or small file name we don't know. So for that we can use -i name. फाइल 4 जो था वो स्मॉल था बट आई नेम के साथ जब हमने इसको सर्च किया तो इट कैन फाइंड आउट. नेक्स्ट इज़ टू फाइंड आउट द डायरेक्टरी. सो डायरेक्टरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे sudo find space \space minus type space d minus name and then space the folder name. So it's the whole command that will be used to find out the directory. So new folder हमारे पास एक directory है, मैं उसको find out करना चाह रही हूँ. मैंने जो है वो इस तरह से इसको find out किया and now you can see it's showing all the new folders that are available in the home directory. You can see इसने तीनों जो है वो new folders मुझे show करवा दिए हैं. So that's all for the find command. And find command जो है that is used for finding the files and folders as well. So that's all for today. It was the second part of the basic Linux command. If you haven't seen the first part, go and check it. And if you want to see the third part, in which I'll be telling some shortcut keys of Ubuntu, its text editors and some other features, stay tuned. And if you like this video, share it, like it. If you haven't subscribed to my channel, subscribe it. And till then,
Take care. Allah Hafiz.